हिप हिप। जब बात फैशन की हो तो देवी जियों को ठंड भी नहीं लगती। यह यूरोप का ऐसा कंट्री है जहाँ इंडियन और चाइनीज टूरिस्ट कम दिखते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका। हम आए हुए दुनिया के सबसे छोटे 5वें नंबर के कंट्री और यूरोप के सबसे छोटे 3रे नंबर के कंट्री सान मरीनो में। इसका कैपिटल भी सान मरीनो है। आपको और डिटेल में बाद में दूंगा, पहले बाहर देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। पहाड़ी पर बसा हुआ ये माइक्रोनेशन है और देखो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पहाड़ी पहाड़ी है। हम अभी पहाड़ के ऊपर आ गए हैं और चलते हैं आगे, आपको दिखाता हूँ आगे का भी। ओके, यहाँ से लिफ्ट में और ऊपर जाना है, आप देख सकते हो, और आप चाहो तो सीढ़ियाँ चढ़ के भी जा सकते हो। ठीक है, चलो ये लोग लिफ्ट में जा रहे हैं हमारे यार दोस्त। हम कोशिश करते हैं कि हम सीढ़ियाँ चढ़ कर जाए। लगता है कुछ ही समय पहले बारिश गिरी होगी क्योंकि सीढ़ियाँ अभी गीली है। यहाँ से नज़ारे भी देखते जाइए। वाह। और आगे हमें हमारी गाइड मिलने वाली है जो हमें और माहिती देगी। जो लोग लिफ्ट से आए वो यहीं पर आए। ये हमारी गाइड है। ये सैन मरीनो का फ्लैग है। Marino, it's the oldest republic in the world, and this is in San Marino. It's from the beginning. It was always the people who decided. They never had a king or a earl or something. It was always the people who decided here, and still nowadays it's like this. It's the third smallest country of Europe. The smallest is Vatican, where the Pope is. Then we have Monaco. Yeah, and then San Marino. It's only this mountain, Monte Titano, 750 meters high, and only 61 square kilometers. It's only the mountain and a little bit around. And you have arrived in the capital now. This is the medieval capital. It's also called San Marino. There is a saint who founded this state, but he wasn't always a saint, like most of us. He was a stonecutter who came from the other side of the Mediterranean Sea, the Adriatic Sea. He came from which was Yugoslavia, Croatia, in the 4th century AD. What did he want to do here? Rimini, down at the coast, one of the big cities there in the Roman Empire, had been destroyed by the barbarians, the ones that came from the north of Europe. They had destroyed everything and they had to rebuild the city. And they needed all craftsmen. So they asked for people to come, and he was a stonecutter. So he came with his friend Leo from this island in Croatia, Rab, and he worked in Rimini. But he wasn't only a stonecutter, he was already one of the first Christians, because Christianity wasn't established until then here. It was all a bit confused, different currents of religion and Christianity. And he came here, and he already, during the work, he wanted to try to get people to become Christians. But there were still emperors, like Diocletian, a Roman emperor. They were persecuting the Christians. So he had to flee. And as he was a stonecutter, he liked big mountains with big rocks. And he had seen the biggest mountain behind Rimini, which is this Monte Titano. And he came up here and he said, I will establish myself here, make a little center for Christianity, and try to convert people to this belief. So the very special thing about San Marino is that this state has stayed independent and free all the time. Since 301, when it was founded, until nowadays, it's a free state. So this is the big miracle of San Marino that you have to remember. They are very proud of their freedom, their liberty. That's why there is written also on the flag, Libertas in Latin. Yes. This you will see everywhere. So this is the one thing that you have to remember. What can you see on the coat of arms here?
3 towers because the mountain has 3 points with castles and towers on top. This is the symbol. And then we have a crown. So you can see this is very symbolic of San Marino. And here obviously the population is very small, only 30,000 people. A bit less than India. Little bit. A little bit less. A little bit. The policeman here guiding us. As you expect, the hilly roads in the mountains. UNESCO World Heritage. सैन मेरिनो के दरवाजे पे वाइफी देखो बड़े ठाट से खड़ी है। यह हमारा रेस्टोरेंट है जहां हम वापिस आके दोपहर का खाना खाने वाले हैं। सैन मेरिनो की बाजार देख लीजिए, यहाँ की सुपरमार्केट देख लीजिए, छोटी सी क्यूट सी बढ़िया सी सुपरमार्केट है। हेलो, सॉरी आई एम फिल्मिंग, इज दैट ओके? ऑलराइट, थैंक यू। सैन मेरिनो का इम्यूनिशन स्टोर आर्मेरिया बेटेस्टिएंटी, यहाँ सब कुछ मिलता है, देख लीजिए। अभी तो बंद है। रेनबो नाइफ है 26.90 यूरो का। सामने ही बड़ी सी गन है, देखो, है ना। चलो, हमारे काम की नहीं है, निकल लेते हैं पहली गाड़ी से। यहाँ से कुछ लेना नहीं है हमें, ठीक है। और ये टॉयज है, देखो कितने क्यूट क्यूट है। दोनों तरफ सैन मेरिनो की बाजार देख लीजिए। It's an Italian sculpture. Is So the what we first have- bank of San Marino, Casa di Italian artist. Risparmio. And before San Marino was an agricultural country before the Second World War, like the surroundings here. And still nowadays they have their own products. Even if they're a small country, they have their own wine, their own wheat, their own olive oil, cheese, and so on. So nice. And then Italy, this is the symbol Republic of San Marino, and they have their own television system. Television, radio, everything from San Marino. सैन मेरिनो की एक और खासियत ये है कि यहाँ लोगों से ज़्यादा कार है। सो रिच कंट्री है, आपको अच्छी अच्छी कंपनी की कार दिखाई देगी। तो ये सैन मेरिनो की एक और विशिष्टता है। But this is a special quarry, and they use it for a special thing. ये किसी ज़माने में क्रॉसबो का ट्रेनिंग प्लेस था, यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग हो जाती थी। आज भी 3 सितंबर को जब इसका नेशनल डे है, यहाँ इसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है और पब्लिक हॉलीडे होता है। मीन इज काइंड ऑफ अ गेटवे ऑफ सैन मेरिनो। Gateway, yes. You can, but if you come to Rimini, you can take a bus to come up here, the nearest big city to see. एंड रेमिनी इज स्टिल पार्ट ऑफ इटली। Rimini is Italy. Yes. Italy. Yeah. सो ये केबल का स्टेशन है, नीचे केबल कार आप देख सकते हो, और वहाँ से केबल कार में आप ऊपर आ सकते हो। नीचे ये ओल्ड टाउन है, जो लोग नीचे रहते हैं ऊपर काम करते हैं वो उसका यूज़ करते हैं, और टूरिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके 5 यूरो चार्ज है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने का। और ये उसका यहाँ का स्टेशन है, देख लीजिए। एक केबल कार यहाँ पर है, जैसे एज यूजुअल होता है, 1 अप 1 डाउन, और ये केबल कार का स्टेशन है। मिलिए इस जनाब से। सैन मेरिनो ने सबसे पहले अपना पोस्टल सिस्टम यूरोप में चालू किया था 19th सेंचुरी में। और ये जो पीछे स्टेच्यू हमने देखा, वो बंदा यहाँ आया था इसका अध्ययन करने के लिए, इसको न्यूमिस्मेटिक एनालिसिस करने के लिए या उसका अध्ययन करने के लिए, और ये बड़ा फेमस हुआ था, तो इसके लिए उसका स्टेच्यू है यहाँ पर। सैन मेरिनो यूरोप का ऐसा कंट्री है जहाँ इंडियन और चाइनीज टूरिस्ट कम दिखते हैं। अदरवाइज यूरोप में सभी जगह आपको इंडियन और चाइनीज टूरिस्ट देखेंगे, बट यहाँ बहुत ही कम है। और ज़्यादातर यहाँ अमेरिकन टूरिस्ट आते हैं
जो आते हैं रिलैक्स करते हैं, यहाँ का जो वेदर है, एटमॉस्फेयर है, उसका आनंद लेते हैं। बट हम ही है जो यहाँ पर एज एन इंडियन टूरिस्ट घूम रहे हैं। चलो सैन मारिनो के एक बड़े से चौक में आ गए हो। यहाँ रोलेक्स बिकता है, देख लीजिए। So here we are in the main square, Square of Liberty. We also have a Statue of Liberty here. You see, it's a bit different than the one in New York. Look at her head. What does she have on her head? Castle? Very good. A crown with the 3 castles of San Marino. And this is the public building. This is the government building here. As you see it now, it's from 1894. And inside is the parliament. It's called the Great and General Council here. They have elections like in India. Every 5 years they elect a new parliament. From the parliament they elect inside 10 secretaries of state. And a very strange thing in San Marino, they have not one head of state, they have 2. And they're elected every 6 months. Oh, so everyone gets done. Yes. I see the Indian people understand very fast what is going on, you know. 1st of April and 1st of October, 2 new heads of state are put inside the government. So every 6 months they can't do any much bad and not much good. You can see this is the balcony where they come out usually when they're elected. And they greet the people. They have their special costumes, and here is the military band and everything playing, you know, all the special noble guards with their feathers on the hat and so on. यहाँ जो 2 हेड ऑफ स्टेट्स इलेक्ट करते हैं हर 6 महीने में, उसको डेडिकेटेड कार दी गई है। उसका नंबर होता है ऑलवेज SM001 और SM002। और ये एरिया में जहाँ हम खड़े हैं वहाँ वो पार्क होती है। जरा हम कैमरा को घुमा ही देते हैं आपके लिए। और ये है SM001, देख लीजिए। ऑडी है, साथ में है क्राउन का सिंबल है। पारू एट लिबर्टी स्क्वायर, सैन मरीनो। चलो ये हाइट से भी सैन मरीनो का दृश्य देख लीजिए। ओल्ड टाउन और पीछे एकदम हरी पर्वतमाला है। So in former times they had built a very small church. It's a nice church because there are a lot of light is coming inside. And inside it's everything about San Marino. The Catholic religion is also about Jesus and Christ and so on. But here Jesus is very small. Behind the altar you have a statue of him. So we can go inside and have a look. अब हम जा रहे हैं सैन मरीनो चर्च के अंदर। वहाँ एवरीथिंग इज अबाउट सैन मरीनो, द फाउंडर ऑफ दिस कंट्री। और वहाँ जीसस का कम है, सैन मरीनो का ज़्यादा है। So big statue सैन मरीनो का है और जीसस क्राइस्ट ऊपर है इतने से। That they is independent from the Pope. This is what they want. And on the side here, if you come along here and you look in here, in the glass thing, this is the skull that was cast in silver and a golden crown put. Always the skull of the Saint Marino. Okay? They preserve it. Yes. Here you have a lot of light and these flowers they give this special smell. And very good acoustics, you can hear the voice. जो बंदा ईस्वी सन 301 में टोन कटर बन के क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए आया था, आज यहाँ पर भगवान बनकर पूजा जाता है और जीसस का कद इससे छोटा हो जाता है। देख लीजिए, देखिए यहाँ से पूरे चर्च को। सामने आपको सीधा दिखेगा जो सैन मैरिनो खुद है, यहाँ का स्थापक। इसके ऊपर जीसस क्राइस्ट है। और वापस लाओ, ये हमारी वाइफ ही है, देख लो। और ये है बेसिलिका डी सैन मरीनो, सैन मरीनो का चर्च। ये 1926 में रिनोवेट हुआ था। ओरिजिनली इट वाज इन 1838।
सैन मेरिनो की गलियों में घूम रहे हैं। देखो हम भी आ गए। सैन मेरिनो की गलियां नीचे दिख रही है, ऊंची नीची आड़ी टेढ़ी। ओके, सेलिब्रेटिंग हैप्पी बर्थडे ऑफ दिस लेडी। हैप्पी बर्थडे। शी इज द ब्रेव लेडी, शी केम अलोन ऑन हर ओन। दिन ये आए बार बार हम के गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू मैडम, हैप्पी बर्थडे टू यू मैडम, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बर्थडे सेलिब्रेशन काइंड ऑफ जब हम रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाने गए वहाँ भी चालू रहा, क्योंकि वहाँ जो बंदा है ये अल्डो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाइव बंदा है। और देखो हमने इसका तस्वीर लिया, ये हमें अपना ऑटोग्राफ दे रहा है। ये रहा उसका ऑटोग्राफ वाला फोटो। बहुत ही बढ़िया बंदा है। चलो आज का सफर यहाँ खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट अवश्य दें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।